अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक लेसन नंबर 7 पोर्टफोलियो एनालिसिस ए मार्केटिंग प्रोसेस एनालाइजिंग द करंट बिजनेस पोर्टफोलियो। We have discussed in last lesson that current business portfolio the company must conduct portfolio analysis, a tool by which management identifies the various business that make up the company. Two steps are important in this analysis। वो कह रहा है कि इसके दो स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई टेक the key business SBUs। The strategy business unit SBU is a unit of the company that has a separate mission and objective and which can be planned independently from other company business। To apprehend the SBU can be a company division, a product line within a division, or even a single product or brand। Number 3 है the sound steps is the asset the activeness of its various SBU and decided how much support each division। Number 4 है the basket non profile planning method is the Boston Consulting Group BCG matrix। इसके बाद वो कह रहे हैं नंबर 1 पर है यूनिट द BCG approach where a company classification all the SBU according to the growth share matrix। ए है इसका द vertical X market growth rate provide a measure of market activeness। B है the horizontal X related market share server as a measure of company strength in the marketing। नंबर 2 है यूजिंग द मैट्रिक्स फॉर 4 स्टेप्स द एसबीयू डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1 है स्टार्स, लास्ट लेसन 2 है कैश काउ, 3 है क्वेश्चन मार्क और लास्ट पे है डॉग्स। इसके बाद हम बात करेंगे 1 इट्स हैज़ क्लासिफाइड इट्स एसबीयू। अ कंपनी मस्ट डिटर्मिनेट व्हाट रोल ईच विल प्ले in the future। The 4 strategies that can be purchased for the SBU are। Number 1 है the company can invest more in the business unit in order to build its share। Number 2 है the company can invest ignores just the hold at the current level। Number 3 है the company current harvest the SBU। Number 4 है the company can divest the SBU at as time passes use change in a position in the growth share matrix। Each has its own life cycle। इसके बाद हम बात करेंगे इसी के ऊपर द नंबर 1 पर है द कैन बी डिफ़ॉल्ट टाइम कंज्यूमिंग एंड द कस्टमर इम्पैक्ट। नंबर बी है मैनेजमेंट ऑफ द फाइंड डिफ़ॉल्ट टू द डिफाइन एसबीयू एंड मेजर मार्केट शेयर एंड ग्रोथ। नंबर 3 पर द फोकस on classification current business but provide little advice and future planning। Number 4 है the can lead the company at a place too much emphasis on market share growth the growth through entry into actively in new market। This can cases usually expenses into hot news risk varieties or given up on establish units too quickly। इसके बाद हम बात करेंगे डेवलपमेंट ग्रोथ strategies। Company should always be looking to the future। One useful device for identify growth opportunities for the future in the products market expenses guide। The product market expenses guide is a profitable planning the tools of for identify company growth opportunities through। इसके बाद हम बात करेंगे मार्केट apprentices। मार्केट making more sales to present customer without changing products in a way market phone trends mean typing to the present market's probability throughout a make awareness marketing mix। The firm may try to strengthen its relationship with the customer to increasing that rate of use return purchase or try attack competition customer of current। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 2 पर मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट है क्या स्ट्रेटजी फॉर कंपनी ग्रोथ बाय आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग न्यू मार्केट फॉर करंट कंपनी प्रोडक्ट्स। एग्जांपल डेमोग्राफी मार्केट्स मार्केट डेवलपमेंट मेजर ट्राइंग इंक्रीजिंग सेल्स बाय सेलिंग प्रेजेंट प्रोडक्ट्स इन अ न्यू मार्केटिंग फील्ड में ट्राई एडवर्टाइजिंग
in a different media to research new target customer or the may and channels of distribution on new store in new areas including awareness। इसके बाद नंबर 3 पर बात करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या स्ट्रेटजी ऑफ कंपनी ग्रोथ बाय द ऑफन मॉडिफाइड और न्यू प्रोडक्ट्स टू करंट मार्केट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मीन ऑफरिंग new or improved product for present markets by knowing the present markets need a firm may see new way to satisfy customer। Computer software firms like Microsoft boost sales by introducing new variation for popular programs। नंबर 4 पर बात करेंगे diversification, a strategy for the company growth by starting up or a current business outside the company or current products and market development means moving in totally different lines of business pairs internally in multiple products markets or even levels in the production market system। इसके बाद planning growth functional strategies। The final step in the strategies planning process is planning functional strategies। A पर है once the strategies plan is in place more details planning must take place within each business unit। नंबर 2 पर है each department provide information for the strategies planning। Marketing plays a key role in the company's strategies planning process by इसके बाद है नंबर 1 पर है provide a guide publish। 2 है providing inputs to strategies plans by helping identify attached markets opportunities and by assessing the firm's potential take advantages of them। Number 3 है within advanced units marketing design strategies of reaching the unit's objective। Number 4 पर है markets are challenged to find way to get all department to think customer। ये था आज का हमारा टॉपिक। अब हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। That's it, Brian?